friends, welcome to the fourth lecture on ArcGIS brought by Tech Info Hub channel. So friends, आप लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट किया था कि फोर्थ वीडियो कब आएगा, तो काफ़ी अवेटेड था ये वीडियो. सो here it is, we are here with the new video. So friends, इसमें पहले मैं आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि जो टूल्स, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है. उसके बाद अपन नेक्स्ट जो कन्वर्जन फैक्टर है उसके बारे में बात करेंगे. तो पहले मैं इसको, जैसे टेबल ऑफ कंटेंट है, इसको हटा देता हूँ. उसके अलावा मैं इसमें ये भी हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ, और इसके अलावा ये भी हटा देता हूँ. तो इस तरह से कुछ इंटरफेस रहता है जीएस का. तो इसमें अगर आपको जैसे कस्टमाइज करना है तो इसमें टूल बार से आप एडिटर का टूल बार ऐड कर लीजिए. उसके अलावा जो जो यूज होता है इसमें स्टैंडर्ड वाला कर लीजिए. उसके अलावा आप यहाँ से भी राइट क्लिक करके कस्टमाइज कर सकते हो. टूल्स कर लीजिए, और जो टेबल ऑफ कंटेंट है फ्रेंड यहाँ से मिलेगा आपको. इस पर क्लिक कर लीजिए तो टेबल ऑफ कंटेंट ऐसे आ जाएगा. आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो कहीं भी. तो मैं इसको भी यहीं रख रहा हूँ. इसको आप इस तरह से कस्टमाइज कर सकते हो. इसके अलावा फ्रेंड्स, जो विंडो का ऑप्शन है, इससे भी आप टेबल ऑफ कंटेंट क्लिक कर सकते हो. इसके अलावा ये कैटलॉग हो गया. ये कैटलॉग यहाँ आने के बाद आप इसको यहाँ से प्रिंट कर लीजिए तो आपका ये यहाँ हो जाएगा. इसके अलावा ये सर्च है, इसको भी आप यहाँ से प्रिंट कर लीजिए. और इसके अलावा टेबल ऑफ कंटेंट हो गया आपका. सर्च का ऑप्शन हो गया है. तो इस तरह से ये है. इसके अलावा ये आपका न्यू फाइल का है. इसमें मैं आगे की वीडियो बताऊंगा कि न्यू फाइल में, जैसे ये आपका न्यू फाइल, अगर इसमें न्यू फाइल क्रिएट करनी है तो आप Ctrl+N से भी कर सकते हो. इसके अलावा आपको अगर एग्जिस्टिंग कोई प्रोजेक्ट ऑन करना है तो Ctrl+O से भी आप कर सकते हो. ये शॉर्टकट की है इसकी. देन ये सेव है. अगर आपको किसी और फॉर्मेट में सेव एज करना है या सेम फाइल को आप एडिट करके सेव एज करना है तो ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हो. उसके अलावा फिर प्रिंट व्यू है, प्रिंट की इसमें स्टाइल है. और इसके अलावा एक्सपोर्ट करना है तो मैं किस तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हो. इसके डिफरेंट ऑप्शन रहेंगे. इसमें कौन कौन से फाइल में आप कर सकते हो, ये आने वाले वीडियोस में अपन देखेंगे इसके बारे में. इस तरह से ये एडिट का ऑप्शन है. और ये स्केल है, आप इसमें जितना जिस स्केल पे आप रखना चाहते हो उस स्केल पे रख सकते हो. इसके अलावा अपन ने मैप व्यू और ये ऑप्शन भी पहले देखे थे. तो ये मोटे तौर पे इस तरह से ऑप्शंस है इसमें. इसके अलावा आइडेंटिफाई का ऑप्शन है. अगर आपको कुछ मेजर करना तो उसका है. आपको अगर एक्सवाई डालना है, किसी लोकेशन का फाइंड करना है, तो ये इसका ऑप्शन है. तो इसमें डिटेल में आगे भी बात करेंगे. अभी जो मेन इस लेक्चर का जो पर्पज़ था कि हाउ टू कन्वर्ट लेयर टू सेव फाइल एंड सेव फाइल टू केमल फाइल एंड केमल फाइल टू सेव फाइल. सो उसके लिए पहले गूगल अर्थ पे चलते हैं. ये गूगल अर्थ पे आ गए अपन. तो यहाँ पे एक हासलपुर करके विलेज है. तो इसमें हासलपुर विलेज की एक फाइल अपन क्रिएट कर लेते हैं. और इसकी बाउंड्री अपन डिजिटाइज कर लेते हैं कि जो हासलपुर विलेज है is like this. So we are digitizing the boundary of Hasalpur village. For example, this is a boundary of Hasalpur village. So likewise we have created the vertex and we have digitized the boundary. So click OK and then save this file. Save places is and save this file as KMZ file. So click save.
So this file has been saved in this folder. So now we are going in ArcGIS map. So from here click, then first of all click the folder to link. So this is folder. So actually now we have to convert the KMZ file to save file. So go to search option and then click KML to layer. So search KML to layer, and this is KML to layer. Click on this. Then in input KML file, browse and select the Hansalpur village KMZ file, and then in output location also browse and add this folder. That you have to first browse. Okay, for instance, I am going to copy this path, add this path, then click OK. So here you can see KML to layer conversion is taking place. Okay, then you can see the message KML to layer has been completed. So just click on this and change the color. So this is the boundary we have imported from KMZ file. We have converted the KMZ file to save file. Now we are going to do the vice versa. So we are going to convert the save file to KMZ file. So for that, first we are going to create a new save file. So for that, first click on catalog, then this folder, click right click, then click on new, and here it is save file. So which type of save file we are going to create? So name of the save file, so let's say this is Hansalpur city or Hansalpur city. So feature type, so we are going to select the polygon, and then in coordinate system, so this is unknown coordinate system, so we are going to assign the coordinate system. So click on edit, on geographic coordinate system, click on plus to expand, and then go below, select the world, and in world you can scroll down to WGS 1985 4. Okay, then in projected coordinate system, click on UTM, and in UTM WGS 1904, and in WGS 1984 click on northern hemisphere, and then you can scroll down to WGS 1984 UTM zone 14 and click OK. Then again click OK. So folder has been created and added to layers. So now you can click on this and then go to edit and click on edit and start editing. Select the Hansalpur city, click OK, continue, and then you can click on this is create feature option, click on Hansalpur, and then you can start editing. So click here, click here, click here, click here. So you can digitizing the so like this you can digitize the boundaries of Hansalpur city. So for example, this is Hansalpur city. So we have digitized, and now you can go and stop editing. Okay,
So if you directly stop the editing, then there is no digitized file. So again we are going to edit the file, start editing, okay, continue, then click on Hansalpur and then again start digitizing. So we are digitizing the boundary of city. So this is Hansalpur city. So we have digitized Hansalpur city. Then just finish this case and you can directly click the F2 button. So we have finished this case. Now we can click edit and stop editing, and it will show a message that do you want to save your edits. So click on yes. Yes, we want to save the edits. So now we have a proper save file. So we have just created a polygon save file, and now we are going to convert this to KMZ file. So again click on search, and you can type here layer to camel. Layer to camel, click the second option, layer to camel. In layer to camel, select the layer, which layer you want to convert to KMZ file. So we want to convert Hansalpur city to KMZ file, and then in output file we are going to select browse the particular folder. So we are going to copy and paste this path, and we are going to name the file as Hansalpur city, then OK. So .kmz automatically added to its extension. So now click on OK. So now you can see here that layer to cable file has been created successfully. So now we are going to open this file in Google Earth. So just open the folder. So this is Hansalpur city. You can directly drag and drop in Google Earth Pro. So here you can see we have successfully imported the save file to KMZ file. You can right click on this Hansalpur city KMZ file, and you can check property. In property style you can fill to outline to see the features beneath, or you can change the color as well. So in outline you have to change the color to see the boundary. So this is filled, this is filled, this is outline. Okay, we are going to increase the width of lines to see the boundary. So now it is visible. So this is the Hansalpur city. So we have successfully imported the save file to KML file. So likewise we can, so we have learned that how to convert save file to KMZ file and KMZ file to save file. सो फ्रेंड्स ये अपना इसका पर्पस था मेन इस लेक्चर का. तो फ्रेंड्स बहुत सारे दोस्तों का रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप इंग्लिश में जो है वो लर्न करवाइए, हमको टीच कीजिए, क्योंकि इंग्लिश में ऑलरेडी देर आर मेनी वीडियोज ऑन यूट्यूब. सो इट्स दैट्स वाई मैं चाह रहा था कि आपको हिंदी में वीडियोस में दूं, जिससे कि बहुत सारे जो लोग हैं वो हिंदी में इंग्लिश में इतना अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, इसलिए हिंदी में मैं वीडियोस कर रहा था. तो फ्रेंड्स मैं एक ऊपर क्वेश्चन आई में छोड़ रहा हूँ कि आपको कौन सी लैंग्वेज में वीडियोस पसंद आते हैं, कौन से आप वीडियो चाहते हो.
तो फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोस अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं। एक्सेल पे भी वीडियोस अभी एडवांस आने वाले हैं, और आरजीएस पे भी बहुत सारे आएंगे इसके बाद, और स्वेट सॉफ्टवेयर पे भी काम चल रहा है, तो उसको और इसको आर्क मैप को कैसे लिंक कर सकते हैं, इस तरह की बहुत सारी मॉडलिंग के सॉफ्टवेयर भी हैं। एनालिसिस के बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। अभी आरजीएस में बहुत सारे एडवांस फीचर की वीडियोज आएंगे, और इसके अलावा बहुत सारी एप्लीकेशन पे भी आ सकते हैं कि कैसे ऐप क्रिएट किए जाए। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पे आएंगे। स्लोली स्लोली आपको नई नई जानकारी मिलती रहेगी, नई नई चीज़ें मिलती रहेगी, आप एडवांस हो जाओगे एक तरह से। तो फ्रेंड्स, आपको अगर इस तरह से ही हेल्पफुल वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ ट्यून अप रहे और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, and stay tuned for next video.